Um, Many of the students today said that they want, again, it was a request to start the class late. So we'll do some part of it now. I'll be there because some of you must be waiting. So we'll be there for almost 15 minutes or so. And then I'll probably come back live again at 9 to see that how many of them were actually serious about their commitment. So, not one, but I've seen many people not being able to attend because someone's traveling that time and someone has household chores to do. So, we'll take a call and we'll see. Good evening, Kushi. Yes. Okay. Good evening, Prathama. Bharti, good evening. Okay, so we'll start off since many students have already been sweet enough to be punctual. So we'll go ahead and then we'll see. Good evening, Sachi. Okay, so today we are going to. All right, let me take one more minute. Good evening. Good evening, Sanya. Good evening. I probably am missing out on some name. Okay. Again, like I say, I'll look at it later also. Okay. So today we are going to start with phrasal verbs. Now, what are phrasal verbs? You've all learnt verbs. Like verb you all know, play, talk, learn, shout, enjoy, celebrate. Wherever there is action, that is verb. Now, when a verb is put together with a preposition, then that is called a phrasal verb. So today we'll begin with the phrasal verb with the word or the verb go. Go. So one common or maybe go also can be taken later with the few list, and I can also take you to with something more interesting just came to my mind. We can also do with take. Take. So first is the phrasal verb take off. Take off. So take off means one meaning is leave. जैसे प्लेन उड़ने वाला होता है जब हवाई जहाज तो आप बोलते हैं टेक ऑफ होने वाला है. प्लीज टाई ऑन, fasten your seat belts, the plane is about to take off. तो छोड़ना, leave, that way, take off. Good evening, Shekhar. And next is when you change, like आप कहते हो कि भाई गीले कपड़े हो गए इनको उतार दो. So take off your wet clothes and wear other clothes. So take off has both the meanings. One, and I hope as always people are noting down, one is leave, L-E-A-V-E, leave, and the other one is remove. Please write down sentences. I don't mind waiting, I'll wait. But without the sentences, it will be no help because where will you use these? So the plane took off, and in phrasal verbs, we can always change the tense. So if we want to use it in present tense, we can use it in present, past, future. Depending on the situation, we can use the phrasal verbs. So here when you say, the plane took off in time. Take off, O-F-F. सिमिलरली जैसे आपने शुरुआत में मुझसे इंग्लिश सीखी थी तो आपने सब ध्यान दिया था कि पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव कहिए, एफर्मेटिव कहिए, नेगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है. सो सिमिलरली हियर टेक ऑफ कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट. द प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ. अबाउट टू मीन्स करने वाला, होने वाला.
वो आने वाली है, साथ साथ लिखते जाइएगा, जैसे जैसे मुझे स्ट्राइक करेगा जो भी बोलूंगी तो साथ साथ भी आप नोट करिएगा। तो अबाउट टू भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ होने वाला है, कुछ करने वाले हैं, तो जैसे आई एम अबाउट टू गेट अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, मुझे मिलने वाली है, तो अबाउट टू। शी इज अबाउट टू become a doctor. Depends. I mean, in different situations, you can use this. So, first was take off, which you use in present. The plane is about to take off. You can use in negative, like means I should not name, but मेरा personal experience SpiceJet के साथ ऐसा रहा है कि अक्सर flight delay हो जाती थी. So the plane did not take off as scheduled. The plane did not take off as scheduled. अब आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पता चलना चाह रहा है आपको कि भाई टाइम से वो पहुंच गया था कि नहीं, या फ्लाइट टाइम से चली कि नहीं. सो यू कैन से डिड द प्लेन टेक ऑफ इन टाइम, टाइम से प्लेन उड़ा कि नहीं, वहां से चला कि नहीं. नेक्स्ट इज टेक ओवर. टेक ओवर, टेक ओवर होता है अथॉरिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी चीज को ले लेना. यू कैन राइट डाउन टेक ओवर मीन्स टू गेन अथॉरिटी. टू गेन अथॉरिटी. गुड इवनिंग शुभम एंड गुड इवनिंग रोहित. So, take over, gain authority. Like Tata Group has or had, अब तो past की बात हो गई है, had taken over the company. कोई भी उन्होंने जो कंपनी को ले लिया अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, taken over. Right, Mridul. Fine. Next is to take over, you can understand. The Tata Group has taken over this project. कोई प्रोजेक्ट था, उसको उन्होंने अथॉरिटी ले ली. दे आर गोइंग टू डू इट. टेकन ओवर. द कंपनी एयर इंडिया वाज टेकन ओवर बाय द टाटास. नेक्स्ट इज, थोड़ा फर्क समझिएगा. टेकन ओवर मीन्स अथॉरिटी ले ली उसके ऊपर, और ओवरटेक ड्राइविंग वगैरह में जो आप करते हैं. डोंट ओवरटेक. नेक्स्ट इज टेक फॉर. टेक फॉर ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए भी यूज होता है, और जैसे आप रिलेशनशिप्स में किसी को ग्रांटेड ले लेते हैं तो भी आप टेकन फॉर बहुत सुना होगा आपने. ही हैज टेकन रुचि फॉर ग्रांटेड. या थोड़ा वार्निंग देनी होती है कई बार कि भाई एक्सपेक्ट करते हैं कई बार लड़के कि भाई लड़की मानी जाएगी या कुछ नहीं कहेगी, नाराज नहीं होगी ज़्यादा, तो फिर लड़की नाराज होकर हक दिखा के अपना बोलती है डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड. डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड मीन्स कि आप हर बार ये नहीं समझ सकते हो कि जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा. मैं अपने चेंज भी कर सकती हूँ, मूड, दिमाग बदल भी सकता है. सो ये बहुत कॉमन यूज है, टेकन फॉर ग्रांटेड. सो टेक फॉर विथ ग्रांटेड. नेक्स्ट इज, शायद एक आधे लड़के को अच्छा नहीं लगा, बच्चे को एग्जाम्पल, ये बड़ा खतरनाक मामला है. एनीवे, नेक्स्ट इज टेक इनटू अकाउंट. टेक इनटू अकाउंट. So you can write down the meaning for take into account. To consider or remember something means आपको समझाऊंगी मैं, बट आप एक बार लिख लीजिए. To consider or remember something before taking a decision. अब take into account. So आप इसको क्यों नहीं ध्यान में रखते हैं? Take into account, किस चीज को ध्यान रखना कोई फैसला करने से पहले. जैसे the company took this into account that female employees needed to be given
pregnancy leave, maternity leave बोलते हैं उसको, maternity leave for pregnancy, right? तो उस चीज को ध्यान रखना, उसको मद्देनजर रखना, that is take into account. You must take into account the fact that women work more than men in the sense of household chores. Next is take after. Take after. So take after जब किसी से किसी की शक्ल मिलती है. So the word is resemble. R-E-S-E-M-B-L-E. Resemble. किसी की कहते हैं ना उसको, वो अपने पापा पे गया है, वो अपनी मम्मी पे गया है. So that is take after. So अब आपको क्योंकि सेलिब्रिटीज का बड़ा शौक रहता है उनकी बातें सुनने का, तो आलिया भट्ट की जो बेटी है राहा कपूर has taken after her father, right? So taken after. Next is take down. Take down. Take down means likhna. Write. W-R-I-T-E. Please take down notes seriously. Make sure that you take down whatever is important. Take down. Next is take to task. Take to task. मतलब डांट लगाना, scold, reprimand. He was taken to task by the headmaster for coming late to school. She was taken to task by her mother for not doing the dishes. He was not taken to task despite avoiding the norms. So, taken to task. Take up. Take up. कोई आप नई रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह लेते हैं, कोई जिम्मेवारी लेते हैं, then you use the word take up. He has taken up the new job as vice president of. Why don't you take up this responsibility? He did not take up this task because he found it too tough. अब take on भी बोलते हैं. He has taken on the project. Take in. Take in is when there is cheating, when there is deceit. D-E-C-E-I-V-E, deceive, धोखा देना. और taken in यानी कि नॉर्मली उन सेंस में यूज होता है धोखे के लिए, किसी की बातों में आ जाने के लिए. सो आई वॉज टेकन इन बाय हर प्रॉमिसेस. I was taken in by her promises. Another meaning of taken in is when you understand something. So two meanings. One is of cheating
Another is of understanding something. So she was taken in by his looks. शक्ल से धोखा खा गई. दिखने में बहुत सोबर लग रहा था, बहुत डिसेंट लग रहा था, तो लगा अच्छा ही होगा. She was taken in by his appearance, by his looks. Same way can be for the boy also. He was taken in by her appearance, by looks. Another I said was to understand. तो आप किसी सिचुएशन में ऐसे बोल सकते हैं, मैं समझ नहीं पाई उसको कितना समझ में आया होगा. जितना भी मैंने उसको समझाया, जितनी भी बात हुई, मुझे नहीं पता वो कितना समझ पाई. So I'm not sure how much of what I said was taken in by her. I'm not sure how much of what I said was taken in by her. So this was about take. Now you take a minute or two. Take a minute or two means 1-2 minute ले लो. Take a minute or two and revise without doing anything else. Just revise all the take till I move ahead with. Okay, hello. Good to see you here. Attendance marked. Okay. So आप एक बार take का revise करिए and I'll be back in a minute. Good evening. Yes, I think you were on the way, so you got late, but yes, you can always take a look at the video later. And आज एक बड़ी फनी चीज हुई. एक बच्ची कहती है कि आपके वीडियोस तो होते ही नहीं है, शॉर्ट्स होते हैं. मैंने कहा शॉर्ट्स 1 घंटे का वीडियो होता है. इट्स नॉट अ शॉर्ट, राइट? सो गिव मी अ मिनट, आई विल कम बैक. Till then, please just revise. I'll just come back and ask, and how many phrasal verbs did you do with take? Yeah. Yes, revised. Okay. So now we move on to the phrasal verbs with put. Put. What does put off mean? P-U-T, put. O-F-F, put off. What does it mean, put off? Put off means to postpone. Postpone means P-O-S-T-P-O-N-E, means to delay. Right? So, the meeting was put off due to some urgency. यानी कि मीटिंग थोड़ी पोस्टपोन कर दी गई कुछ अर्जेंट काम की वजह से. What does call off mean? Call off. Call off means cancel. Again, यहाँ पे off, O-double-F, O-F-F ही रहेगा. Call off is cancel. The match was called off. The match was called off due to heavy rain. Clear? So the match was called off due to heavy rain and the meeting was put off. O-F-F.
Next, put aside. Put aside. Put aside is to save something for future. To save something for future. She put aside some money for her trip. यानी कुछ अलग से पैसे हटा के रख लिए, बचा के रख लिए. Put aside. She put aside some money for her trip. Next is put aside. एक और यूजेज भी होता है put aside का, कि जब आप थोड़ा सा कहते हो कि ध्यान मत दो, अवॉइड कर दो. Just a minute. Yes, so some of you are there and some of you I believe have, I don't know, some of them are not consistent. देखिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो अगर आप सीरियस नहीं होंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, उतना टाइम नहीं डालेंगे, तो एक देसी कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा. तो यानी आप जितना एफर्ट डालोगे इंग्लिश सीखने में वैसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको. तो अगर आप ऑफ ऑन करते रहते हो कि 15 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, फिर चले गए, फिर ये काम, फिर वो काम, तो फिर आप सेपरेटली बैठे. You take this video and be there for 1 hour as if it's a regular class. Then you can expect result. Next is put aside. मैंने कहा था कि put aside हटा देने के सेंस में भी कहते हैं. Put aside all your differences and save your marriage. यानी आपके जितने भी मतभेद हैं उनको साइड पे रखो और अपनी शादी बचा लो. Put aside. 2 meanings are there. Next is put across. Put across. Put across means to share your opinion, to express yourself, your opinion. So I can say, why don't you put across your points? Why didn't you put across your point to your family? So please write down. Put across is give opinion. O-P-I-N-I-O-N. Opinion. Give opinion. Next, put up with. Put up with. Put up with means to tolerate. To tolerate. I cannot put up with this nonsense. यानी मैं ये फालतू की बकवास सहन नहीं कर सकती. So, tolerate. T-O-L-E-R-A-T-E. Put up with, tolerate. Anjali found it tough to put up with Rahul's rude behavior. आप लोग एक काम करिए, आप लोग साथ साथ सेंटेंस बनाइए. अब जैसे मैंने आपको बोला अंजलि फाउंड इट टफ टू पुट अप विद राहुल्स रूड बिहेवियर, तो आप नाम बदल के और एक बार लिखिए सेंटेंस. यू कैन जस्ट चेंज द नेम्स एंड प्रैक्टिस दैट. पूरा लिखेंगे तो साथ साथ ही याद होता जाएगा. लाइव में लिखिए पूरा सेंटेंस, नाम बदल दीजिए. अगर आपको ये कहना है कि ऐसा मत समझो कि मैं ये बकवास सहन करती रहूंगी. डोंट यू बी अंडर द इम्प्रेशन दैट आई विल पुट अप विद दिस नॉनसेंस. आई विल पुट अप विद दिस रूड बिहेवियर. आई विल नॉट पुट अप विद दिस रूड बिहेवियर. राइट? कल भी मैं एक्सप्लोर कर रही थी और किस तरह से आपको टेस्ट वगैरह दे सकूं, तो थोड़ा थोड़ा आइडियाज आ रहे हैं. देखते हैं हाउ वी टेक इट फॉरवर्ड.
Next is put out. Put out. Put out means extinguish. 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 बुझा देने के सेंस में. Put out the fire. आग बुझा दो. एक और वर्ड भी होता है, अभी हम put से कर रहे हैं, but just for your knowledge, douse the fire. D-O-U-S-E. Douse. Douse the fire. And put out also means publish. Put out के दो तीन usage हैं which are very common. Put out also means publish. For example, the police have put out the photo of the criminal. The police have put out the photo of the criminal in all leading newspapers. यानी पब्लिश करवा दी पुलिस ने उस क्रिमिनल की फोटो हर लीडिंग अखबार में. लीडिंग न्यूज़पेपर्स लाइक जो भी ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं लोग और जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, लाइक दैट. So third is put out. Third meaning is disappointed or sad. Disappointed or sad. The elder brother was put out, put off, or as you can say, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ देख के कि अच्छा इधर उधर करते रहते हैं बच्चे. एनीवे, put on. Put on. Put on means wear. Well, you put on lovely jewelry. पहनना, W-E-A-R. Wear. Put on. अच्छा, मुझे एक जवाब दीजिए, आपको अभी ही कंप्लीट करना है सारा या आप चाहते हैं कि मैं एक 9 बजे आके और आपको आधा घंटा तक पढ़ाऊं? यस, प्लीज गिव योर फीडबैक. आप चाहते हैं कि अभी खत्म करूं, कंटिन्यू करूं 1 आवर, और यू वांट 9 o'clock कि आधे घंटे बाद आपको दोबारा पढ़ाऊं? आप जवाब देंगे तभी मुझे समझ में आएगा ना. I think I should continue. If this is the case, if there's no response, I better continue. Okay, so put on. We are going to the party. We are going to attend the party. Please put on your best clothes. Dusra, put on means gain. Gain. She has put on a lot of weight. वजन बढ़ा लिया काफी. I have put on a lot of weight. बेटे एक ही बच्चे का जवाब आता है तो कंफ्यूजन रहता है. वो तो कम से कम जितने बच्चे देख रहे हैं वो सब थोड़े जवाब दे तो पता चले. अभी आज फिर खत्म करवा देते हैं. I think tomorrow onwards I might like to start the session at 8:30. कल मैं 8:30 start करूंगी session and we'll see if it works better for people. 8:30 में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? 8:30 से 9:30. Any problem? So some people are okay with that. प्लीज और बच्चे भी एक बार जवाब दे दीजिए कि 8:30 ठीक है ना.
8:30 से 9:30 आई थिंक इट्स लाइक फाइन. और फिर बाद में देख लेंगे कि अगर 9 to 10 जो बच्चे बहुत कह रहे हैं तो वील सी द डिफरेंस. फाइन, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर ओके विद दैट, विच विल बी फाइन. तो हम लोग देख लेते हैं कल 8:30 करके और फिर एक आधे दिन 9 पे करके. आई थिंक मैक्सिमम बच्चों का ये आ रहा है दैट दे आर ओके विद इट. सो टुमारो आई विल स्टार्ट एट 8:30 and then we'll see if we can shift it to 9 also, because maximum बच्चे को मन है सीखने का, रेगुलर लाइव अटेंड करने का, बट वो ट्रैवल की वजह से उनका लॉस हो जाता है. सो we'll see. So tomorrow 8:30 and then Thursday को देख लेंगे 9 o'clock से 10 o'clock अगर निभेगा तो fine enough. Next, write down, and thank you students, those who've responded. Yeah. So put on is, one is wearing clothes, other is weight. आपको कोई भी चीज आप गेन करते हैं, so normally weight के साथ ही बहुत यूज होता है. She has put on a lot of weight. Next is थोड़ा सा pretend करना, to pretend. You cannot put on a false appearance. You cannot put on a false appearance. Pretend करते हैं ना जैसे. People will come to know that you have pain inside your heart. There is no point putting on a false appearance. Okay. Next is put in. Put in. Write down the meaning. Put in means to make effort in doing something. To make effort in doing something. कोई भी चीज में आप थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, उसके लिए आप put in यूज कर सकते हैं. So she has put in a lot of effort. Hello. So she has put in a lot of effort to improve her communication skills. आप इसको इसके साथ भी, she is putting on a lot of effort to improve her communication skills. Hello Wasim. और कभी कभी put in आप रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर लेते हैं. Sometimes. Put, next is put down. Put down, which means write down, jot down. देखिए अलग अलग वर्ड से आप तरीके से बोल सकते हैं. Write down, jot down, note down, लिखने के लिए. And sometimes put down, if you can make a sentence like this, put down all the words that you have learnt so that you don't forget them. Put down. Next is suppress. Another meaning of put down is suppress. The army put down the enemies. The army put down the enemies. Next one is call up. Call up. So which means calling someone over the phone, on the phone. Why don't you call up your friend if you want to discuss something? Why don't you call up your friend if you want to discuss something? Okay. So let's discuss whatever we've learned till now.
इतने सीखे आपने? जस्ट शो मी दी आंसर्स, मतलब आंसर्स इन द सेंस यू कैन write and share what all you've learned. चलिए, so what we'll do is आज एक्सपेरिमेंट करके देखूं या कल ही ट्राई करूं आपका टाइमिंग का. Okay, give me a response on how you people are benefiting from this live. What is the method you're following to improve your communication skills? If you want to write here, you can write in the chat. If you want to write in the comment box, you can write there. Or are you interested in understanding or knowing how I learned English? है आपको दिलचस्पी जानने में कि मैंने कैसे सीखी इंग्लिश? Yes. कोई जवाब ऐसे अभी आया नहीं है, लिख रहे हैं या हाँ ना के हिसाब से मैं आगे बढ़ूं? You want to know or you don't want to know? Okay. Some people want to know. Yes. So I'll tell you. जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो सबसे पहले तो आई मेड दिस रूल दैट आई विल टॉक ओनली इन इंग्लिश विद पीपल हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश. तो क्या आपने अभी तक ये रूल बनाया? नहीं तो क्या होगा, फर्क क्या होगा कि आप लोग लाइव अटेंड करके नॉलेज बहुत बढ़ा लेंगे, आपकी रिटन इंग्लिश बेटर हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी. So you will benefit, of course. Even if you're not speaking, you will still benefit. But ultimately, the purpose is to make you fluent. Ultimate purpose, everyone wants to get fluent. So understand that you must practice whatever you're learning. आज आपने अभी टेक का सीखा, पुट का सीखा. लिख के दिखाइए मुझे एक सेंटेंस. कोई भी एक आप ले लीजिए. आई एम वेटिंग. कोई मुझे जल्दी नहीं है अभी, मैं वेट कर रही हूँ आपका. आप रिवाइज करिए और कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है, टेक से, पुट से, आप बना के दिखाइए मुझे सेंटेंसेस. तो जब आप लिख पाएंगे सही तो बोल भी सही पाएंगे बाद में. ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड. दूसरा, मैं इंग्लिश सुनती भी काफी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू the language which you want to learn. कोई भी भाषा जो आप सुनना चाहते हैं, बच्चा वैसे ही सीखता है ना भाषा. कैसे सीखता है छोटा बच्चा? ऐसा, मतलब एक बहुत फनी सी बात बोलते हैं लोग कि वो, अरे वो तो अमेरिका में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, बिकॉज वहां वही सुनता आ रहा है ना. और दूसरा पॉइंट, यू आर वरीड अबाउट पीपल टीजिंग यू. यू आर टू मच कंसर्न दैट समवन और द अदर विल टीज यू. कीप दीज थॉट्स अवे फ्रॉम योर माइंड. Don't worry about what others will say to you. Just focus on yourself, your learning, your understanding of things. चलिए लिखिए सेंटेंस. अब कोई तो बताइए, टेक से, पुट से. No response. रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, मैं क्वेश्चंस दे रही हूं, आप उनके आंसर्स लिखिए तो पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया. द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट वर्क. द मीटिंग वॉज dash due to some important work. क्या आएगा यहाँ पे? इतना तो फिल अप द ब्लैंक तो कर ही सकते हैं, आंसर तो बता ही सकते हैं. कॉल्ड ऑफ, पोस्टपोन भी हो सकती है, बट कॉल ऑफ ज्यादा. यस, ओके. अलग अलग सिचुएशंस में आपके अलग अलग आंसर फिट हो जाएंगे. ओके. She was dash by
his promises. She was dash by his promises. तो इसमें आप क्या लगाएंगे? Take on, taken in और taken on, क्या लगेगा इधर? She was dash by his promises. Taken in. बातों में आ गई थी ना, मान लिया था चीटिंग वाला है, डिसीट वाला है, तो शी वाज टेकन इन, उसने उसकी बातों में आके धोखा खाया. द टाटा कंपनी डैश एयर इंडिया. टेक आफ्टर और टेक ओवर. द टाटा कंपनी पास्ट में हो जाएगा. took over, yes, has taken over or took over. Fine. Taken over लगाएंगे तो has भी हो सकता है, had भी हो सकता है, present भी और past भी. अच्छा, Aarti has dash after dash her father. चलो आधा आंसर निकल गया, बच्चे खुश जाएंगे. Aarti has dash her father. तो इसमें क्या आएगा? टेकन आफ्टर. टेकन आफ्टर यानी शक्ल मिलती है उसके अपने पापा से. द चेयरमैन टुक डैश व्हेन ही मेड अ मिस्टेक. द चेयरमैन डैश his manager when he made a mistake. So the chairman took his manager to task. Not lagai chairman ne manager. The chairman took his manager to task when he made a mistake. Take up. She has dash the responsibility of the new home. So she has taken up the responsibility of the new home. Take off. It was so good to see what is it? Let me check. Someone saying something. Okay, thank you. All right. So you've done take over, taken for granted. She has taken her mother for granted. Now go back. Go back के साथ आप लगाइए on, यानी अपनी वचन के पक्के होना कि वो जबान से नहीं जाएगा, जो बोला है वो निभाएगा. So I cannot go back on my words. तो आप I की जगह she, he और they से बनाइए अभी सेंटेंस. she, he, they से सेंटेंस बनाइए. Yesterday we did a session on pronunciation. So those of you who missed it, please go through that ताकि आपकी pronunciation वगैरह भी सुधरी रहे.
चलिए आपको थोड़ा सा पीछे की भी चीजें रिवाइज करवाती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ कितना आपको याद है. What does it mean when you say it's not rocket science? मतलब कोई बड़ी बात नहीं है. It's not rocket science. I can do it. बोले can you handle this project? Of course I can. It's not rocket science. Hang in there means, if someone says to you hang in there, what does it mean? Wait. For hold your horses also, it means wait. To give someone benefit of doubt, ये आपको अपना लेवल चेक करना है कि कहीं वो तो नहीं है कि आगे चल पीछे छोड़. क्या आप जो पीछे कर रहे हैं, पीछे जितना कुछ सिखाया है, इज दैट देयर इन योर हेड, रिटेन हुआ कि नहीं ठीक से. ठीक है. टेल मी अनदर वर्ड फॉर क्वाइट. QUIET. कोई चुप रहने वाला बंदा हो तो व्हाट इज द अदर वर्ड आई शेयर्ड विद यू फॉर दैट? Reticent. 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 What do you call a person who cannot be pleased easily? Someone who cannot be pleased easily. Finicky. 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 जो बंदा घर में रहना पसंद करता है उसका भी मैंने आपको बताया था. व्हाट इज दैट? Someone who likes to stay at home only. Homebody. Homebody. गैस जलाने को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? और गैस बंद करने को? सिमिलरली नल खोल दो, नल बंद कर दो, कैसे बोलोगे आप? टर्न ऑन, टर्न ऑफ. टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑफ द टैप. There are a lot of other things also we did. Yes. Let me check what else to ask you. ठीक है. निचोड़ने की इंग्लिश क्या थी? निचोड़ना. खासतौर से अगर कपड़े ऐसे निचोड़ रहे हो तो क्या कहोगे? रिंग. WRING. और अगर नींबू निचोड़ रहे हो, ऐसी कोई चीज निचोड़ रहे हो खाने की, तो स्क्वीज. SQUEEZE. स्क्वीज. चलिए ठीक है. थोड़ा सा आपकी किचन की वोकैबुलरी भी चेक कर लेते हैं. अंडे को तोड़ने के लिए क्या वर्ड बताया था? शुड यू से ब्रेक द एग और शुड यू से क्रैक द एग? क्या सही यूसेज है? क्रैक द एग. नेक्स्ट इज घोलने को क्या कहते हैं? भाई आप पीछे का बता ही नहीं रहे आंसर्स. घोलना. यस. डिसॉल्व. डिसॉल्व. ऐसे जो डालते हैं उसको क्या बोलेंगे? पानी आप जग में डाल रहे हैं, जग से ग्लास में डाल रहे हैं. pour. Pour the water into the glass. Any question? So far so good. Whatever you've learned till now. Any questions? If you have any questions, please go ahead and ask. कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछे. ओके. ये जो हमने किया था बीट अराउंड द बुश. बीट अराउंड द बुश मीन्स
कि आप आगे पीछे बात करते रहो, मुद्दे पर मत आओ. Beat around the bush. Barking up the wrong tree. This you can always check. Those of you who missed out, we've done a session on idioms. You can go back and check that. I think I'll call it a day now. आज खत्म करते हैं यहीं पे. और आप लोग या तो बता दीजिए कुछ टॉपिक, अगर आपको किसी टॉपिक पे पढ़ने की इच्छा है तो, या कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए. कुछ शेयर करना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं. अदरवाइज जस्ट आई टेक अ मिनट एंड सी कि आपके लिए जरूरी चीजें सारी कवर कर दी हैं आज या कुछ बाकी है. चलिए मैं आपसे रिलेवेंट सेंटेंस बना के देती हूँ. You should always put across your views when someone is asking you to share. Right? Do you think one can put up with this kind of behavior when no one is too keen to respond? Yes? I think this also I'd already told you. Clean up, clean away, clean off, clean out. I'll be happy if I can get to see your responses in comments on how do you find the class and do you have any suggestions, are you benefiting? So instead of telling me right here, you should write in the comment box. Chaliye, I had taught you certain words and you can revise all those. We'll call it a day now. See you tomorrow at 8:30, all of you, and maybe we can, share the news with each other. All right. Bye bye. Thank you, Kushi.